welcome to Fun Scholar. So today we are going to learn, study and solve the solution about the chapter number system. Okay. So first of all tell me what are the numbers. बताइए मुझे नंबर्स क्या है. अब देखिए नंबर्स के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. जब हमने लिखना स्टार्ट किया था तो हमने स्लेट पर, दीवारों पर, कॉपी पेन से लेकर 1 2 3 4 ये सब बनाए थे. तो इससे ही पता चलता है नंबर्स क्या है. सो ये होते हैं नंबर्स. आप में से कोई भी बता देगा. बट टेल मी दैट व्हाई डू वी नीड द नंबर्स. बताइए. इसका भी आंसर काफ़ी सिंपल सा है कि नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ को काउंट करने के लिए. कोई कहेगा कि कुछ चीज़ों का वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैसों की. ओके, 10 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स, 1000 रुपी नोट्स, 2000 रुपी नोट्स विच आर करेंटली नॉन विजिबल. पर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है नंबर्स की. ओके, सो टेल मी, सो व्हाई वी आर स्टडीइंग सिस्टम. ये सिस्टम्स में क्या आता है? तो सिस्टम्स में देखिए नंबर 1 2 3 4 ये हो गया नंबर. ठीक है. 2/5, 7/9 ये भी हो गया नंबर्स. 0.025 ये भी एक नंबर ही है. 0.03333 ये भी एक नंबर हो गया. तो ये सभी नंबर हैं और ये जो नंबरों का मतलब मेला लगा हुआ है इसको ही हम लोग नंबर सिस्टम्स कहेंगे. तो आप बताएंगे कि सभी तो नंबर्स हैं, तो फिर हम लोग इसको एक सिस्टम में क्यों बता रहे हैं? तो इन चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है और आगे भी जाकर पढ़ेंगे कि सभी तरीके का नंबर्स जो होता है उसका एक सेक्शन होता है. जैसे कि ये हो गया सब इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. ये हो गया सब रैशनल नंबर्स. ठीक है. ये हो गया, ये भी रियल नंबर्स. ओके, ठीक है. अब इंटीजर्स के बारे में आप लोग जानते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, लेकिन रियल नंबर्स क्या है? ये हमारी नंबर सिस्टम में द न्यू इंक्लूजन है. ओके, सो रियल नंबर्स आर द न्यू इंक्लूजन ऑफ क्लास 9 नंबर सिस्टम. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नंबर सिस्टम क्या है? ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स. इट इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स फॉर अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स or other symbols in a consistent manner. It provides a unique representation of every number and represent the arithmetic and algebraic structure of the figures. Okay, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिए 1 2 3 4 these are the numbers. 0 itself another number. 2/3, 5/9, -7/8, these are also the numbers. Again 0.232323 ये भी एक नंबर है. 0.9999 ये भी एक नंबर है. ठीक है. और √3, √7 ये सभी नंबर्स हैं. लेकिन इन सभी में जो डिफरेंस है वो है ये सभी एक एक तरीके का नंबर है. जैसे कि पहला वाला हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर. ओके, लेकिन इन सभी नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ रियल नंबर, जैसे कि मैं पहले पिछले स्लाइड में कह रहा था. ठीक है. तो ये सभी नंबर्स को लेकर जो एक सिस्टम बनता है उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं और हम इन सभी नंबर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और करना चाहते हैं और करना सीखेंगे इस स्पेशल चैप्टर में. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
Okay, so the first question, which is quite pretty, which is quite easy one. Ria went to market looking for some fruits, where she found grapes with rupees 15, mango with rupees 20.5, and watermelon 3 tooth price of the mango. Can you calculate the total expense of Ria? तो यहाँ से हमें पता चलता है ग्रेप्स का जो प्राइस है, तो यहाँ से हमें पता चलता है ग्रेप्स का जो प्राइस है वो कितना है ना, 15 रुपये, ठीक है। और मैंगो का जो प्राइस है वो कितना है, 20.5 रुपीज, ओके। एंड प्राइस ऑफ द वाटरमेलन इज गिवन थ्री एंड हाफ द प्राइस ऑफ मैंगो, और 3/2 गुना, यानी मैंगो का जो प्राइस है उसका 3/2 गुना प्राइस हमें वाटरमेलन का देखने को मिलेगा। तो ये कितना होगा, 20.5 इंटू 3/2, ओके। अगर हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10.25 इंटू 3, 10.25 इंटू 3। ये एक ईजी कैलकुलेशन है, 2 से इसको कैंसिलेशन कर दीजिए, देखिएगा 10.25 मिलेगा। सो 10.25 जो निकला हमें, तो उसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा 30.75, ओके। तो ग्रेप्स का प्राइस था 15 रुपया, मैंगो का प्राइस था 20.5 रुपीज़, एंड वाटरमेलन इज 30.75 रुपीज़. So we have to calculate the total expense of Priya. So if I calculate it, so then the answer will be 30, 50, 60, 65 प्लस, अब इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ 50 पैसा और 75 पैसा, तो हमें निकल कर आएगा 1 रुपया 15 पैसा. सो द आंसर विल बी 66 रुपीज़ एंड 15 पैसा या 15 पैसा, जो भी बताइए. ठीक है, समझ में आ गया. मैंने शायद 15 बोला था लेकिन 25 होगा. अच्छा ठीक है, मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि 15 प्लस 20.25 एंड 20.5 और यहाँ पर 15.0 और इधर कितना मिलेगा 20.5 इंटू 3/2 करने पर हमें मिलेगा 10.25 इंटू 3, सो 30.75. सो 30.75, 7 और 5 12 का 2, 1 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6. ओके, तो ये हो गया 66.25, सेम एज द आंसर. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव नंबर्स, एनी नंबर फ्रॉम 1 to positive infinity, एंड नेगेटिव नंबर्स एनी नंबर फ्रॉम -1 to negative infinity. ओके, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका एग्जाम्पल हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो है नंबर लाइन के ज़रिए. अगर मैं इसको नंबर लाइन पकड़ूँ और बीच में अगर ज़ीरो रखूँ, तो इस तरफ ज़ीरो के मतलब राइट साइड ऑफ मी विल बी all the negative numbers and the left side of me will all be the positive numbers. Just like if we write like this, so 0 will be in the middle and this side all will be the positive numbers and this side all will be the negative numbers. Okay, तो
इसके बारे में ही इन लोगों ने बताया है कि पॉजिटिव नंबर्स, एनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी विल कॉल्ड एज द पॉजिटिव नंबर्स, एंड एनी नंबर फ्रॉम 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी, दैट मीन्स दे आर कॉलिंग दिस नेगेटिव इन्फिनिटी एंड these as the positive infinity will be called as the positive numbers and negative numbers. Okay, let's go to next slide. Okay, तो हमने अभी तक जिन नंबर्स के बारे में सीखा है उन सभी को हम लोग एक चार्ट के ज़रिए अब देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है। 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आता है 0, 0 मतलब ये हो गया। उसके बाद आएंगे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स का मतलब होता है 0 और 1 2 3 4 ये जो नंबर्स है इन सबको मिलाकर जो नंबर्स आएंगे उसको हम लोग होल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नेगेटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर ही हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम लोग नेगेटिव साइन ऐड कर दें तो वो हो जाएगा, और होल नंबर्स यानी ये दोनों एक साथ। उसके बाद आएंगे इंटीजर, जैसा कि मैं बता रहा था इन सभी को हम लोग एक साथ में इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद आएंगे रैशनल नंबर्स एंड नॉन इंटीजर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म जस्ट लाइक। अच्छा, रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि दोज नंबर्स विच कैन बी expressed as the p by q form, just like where p and q both are the whole numbers and q is not equals to 0 are called as the rational numbers। हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे कि 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, ये हो गया rational numbers। So these can also be concluded in the number system like this and non-integers in p by q form, and not only the fractions which are naturally the rational numbers, this includes non-fractional numbers as well, just like जैसे मैं बता रहा था 0.2323 ये भी होगा। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, जिसके बारे में हम लोग आगे भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए these are also rational numbers, these are also included in the rational numbers। ओके, तो इसके बाद आएंगे इरेशनल नंबर, जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि √2 एक इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि इनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये हो गया इरेशनल नंबर्स। लेकिन इन सब नंबर्स को हम लोग एक साथ कह सकते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो जो मैंने बताया वो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स के अंडर कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 चलता रहेगा। 0 मतलब 0, होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 -4 ऐसा चलता जाएगा। और इंटीजर्स का मतलब है इन दोनों को ऐड करके हम लोग जो लिखेंगे वही हो गया इंटीजर्स। अच्छा, इसके बाद आएंगे नॉन इंटीजर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म। अच्छा, नॉन इंटीजर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कि 0 पॉइंट, इसका मतलब हो गया जैसे कि 1/9 2/9, दीज आर द नंबर्स। दीज नंबर्स ऑल्सो कैन बी expressed as the p by q form, but they are not integers। okay, so these can be also expressed in this form। irrational numbers जैसे कि मैंने बताया √2 √3 ऐसे नंबर्स। ओके, लेकिन इन सब नंबर्स को हम लोग एक साथ मिलाकर रियल नंबर्स कहेंगे। ओके, क्लियर? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
What are the irrational numbers? I already learned about rational numbers. Maybe numbers which are not rational or irrational. So जैसे कि क्या बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं रैशनल का मतलब ही लोग ये वाला साइन समझ लेते हैं, लेकिन ये जो साइन है हम लोग पहले रैशनल नंबर्स के लिए यूज़ किया करते थे, लेकिन ये इस साइन को हम अभी और नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि दी साइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूट साइन। ओके, सो देखिए दो दोस्त बात कर रहे हैं कि भाई रैशनल नंबर तो समझ गए, लेकिन इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चलकर और भी जानेंगे। A number R is called a rational number if it can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2/3, 1/3, 1/5, these all are the rational numbers because they can be expressed in the rational form। Examples देखिए दिया हुआ है। There are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers। ये भी हमें पता है, जैसे कि 2/3 और 1/3 ये दो रैशनल नंबर्स है। ठीक है, और ये दोनों नंबर ही नंबर लाइन के इस तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों नंबर ही 1 से छोटे हैं, तो फिर 1 इनसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 0 है और ये अगर 1 है और हम अगर इसको तीनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये वाला होगा 1/3, ये वाला होगा 2/3। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच में ये जो गैप है, यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों रैशनल नंबर्स होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके, जैसे कि अगर आप पूछे, जैसे अगर आप पूछे कि सर 1 और 2 या फिर 2 और 3 ये भी तो रैशनल नंबर्स हैं, तो फिर क्या इन दोनों के बीच भी बहुत से नंबर्स रहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन खींचूँ और यहाँ पर एक नंबर लूँ 2 और यहाँ पर एक नंबर लूँ 3, तो इनके बीच में भी क्या बहुत से रैशनल नंबर्स होंगे। हाँ भाई होंगे। जैसे कि 2 और 3 इनके बीच में हम 2.5, 2.6, 2.61, 2.661 ऐसे भी बहुत से नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। एंड दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स एंड वी ऑलरेडी नो दैट रैशनल नंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द P by Q form। Okay, sorry, these are all are the decimal numbers which also can be expressed as the P by Q form। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से शुरू करेंगे, मैं अगर आपको बोलूँ 2.01 से शुरू करें तो आप बोलेंगे नहीं सर 2.001 से शुरू करें। एक और लोग आकर कहेगा कि सर 2.001 से शुरू करते हैं, तो आप काउंटिंग ही स्टार्ट नहीं कर पाओगे कि 2 से 3 तक कितने रैशनल नंबर्स रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में और भी बहुत से, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स स्टेज बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये एक जनरल थियोरी वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, वी ऑलरेडी नो दैट। ऑल फ्रैक्शंस आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, वी ऑल्सो नो दैट। ओके, okay, now let's watch a video. What are real numbers? So let's watch this video. There are so many videos, but we will become a little choosy when playing the videos because we don't want to make this video as very long because this chapter is very much big and there are so many things to practice. So watch the first video. To understand what real numbers are, all
Okay, so what we have learned that what are the real numbers. Okay, so and also learned that there are different kinds of rational numbers as well, which we are talking about, just like in this type, that non-integers in p by q form and also the integers, they all can be expressed as the rational numbers. And what are the irrational numbers? Just like root 2, root 3, and there are so many. The numbers which are, if we transfer them into decimal numbers, which are non-recurring as well as non-terminating. Okay, these numbers can be expressed in the irrational numbers or irrational forms. Okay, so next there is also another video that what are the different categories of numbers that come under real numbers. Okay, so I am not letting you watch that video because you already seen the graph, and so this graph will be the summarization of that video. Okay, I am not letting play that video yet. So let's go to the next slide. Okay, identify the real numbers. Okay, tell me what are the real numbers? These all four numbers are the real number. Just like 2 is a natural number. Okay, and a whole number also. So and rational number also and real number also. So 2 is a real number. Minus 3.5, this is a rational number or a negative number. So this is also a real number. 1 by 2, this is a fraction, and all the fractions are rational numbers. Minus 3.5 is also a rational number, and this is also a real number. But root 3, what about root 3? So root 3 is a irrational number, and the value of root 3 is almost like 1.732 or something. So this is also non-recurring and non-terminating number. So root 3 can be called as the irrational number, and all these four numbers can be termed as the रियल नंबर्स. ओके, इन चारों नंबरों को हम लोग रियल नंबर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर रियल नंबर कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, ये रियल नंबर्स ही है. ठीक है. ओके, ऑल आर द रियल नंबर्स. नेक्स्ट वन, what are number line? A number line is a graphical representation of a straight line that serves as spatial representation of numbers. यानी कि कोई भी नंबर हमें स्पॉट करना होगा तो फिर हम लोग नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं. और जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस नंबर लाइन इज ऑल्सो लाइक दिस स्केल. ओके, सो जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड दैट इफ आई टेक all the positive numbers from like here to here and negative numbers from like here, so the straight line where we are plotting all the numbers can be called as the number line. Okay, the next one, what number line do we have? A real number is either rational or irrational. So every real number is represented by a unique point on the number line. Also every point on the number line represents a unique real number. This is why we call the number line the real number line. अच्छा, तो नंबर लाइन के बारे में हमने अभी तक जो सीखा है, जैसे कि होल नंबर्स 1 2 3 4 5, ऐसे जो होल नंबर्स है, या फिर इंटीजर्स जिसमें कि नेगेटिव होल नंबर्स भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सॉरी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि -1 -2 -3. तो ये जो सभी नंबर्स हैं, इनको हम लोग ईजिली प्लॉट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पर. ठीक है, अगर इसको मैं नंबर लाइन समझूँ, और जैसे कि आपको शायद दिखाई नहीं देगा, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि +15 को कहाँ प्लॉट करूँ, तो ये अगर नंबर लाइन है तो फिर 15 विल बी स्पॉटेड हियर. ओके, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 15
अगर आपके पास भी स्केल है तो फिर आप लोग इजीली 15 को स्पॉट कर सकते हैं कोई भी स्केल के सहायक से। ओके, सो बट हाउ कैन वी स्पॉट दीज नंबर्स, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, इसको अगर हमें स्पॉट करना हो तो हम किस नंबर लाइन को इस्तेमाल करेंगे और वो नंबर लाइन को क्या कहा जाएगा। सो as we already discussed that these all numbers are also known as the real numbers as well as irrational numbers. So these numbers can be represented in the real number line, or that number line can be called as the real number line. Okay. Okay, plot 5/3 on a number line. The fraction 5/3 is the same as 75 divided by 40, which is about 1.66666. Therefore, we simply find 1.666 on our number line like this. Okay. तो अगर हम इसको थोड़ी आसानी से समझें तो फिर the fraction 5/3, तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचूँ जिसके बीच में 0 होगा और यहाँ से 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक है, एंड वी हैव टू डिवाइड 5/3 और प्लॉट 5/3। तो अगर मैं इन सभी को रिमूव कर दूँ और रिमूव करके ठीक है, तो 0 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, तो ये जो डिस्टेंस बना इसको हमें नाप के इसको हमें तीनों पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं 1 2 3, शायद सेम ही हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नाप होगा यही होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस यही होगा वैल्यू 5/3 का। समझ में आया कुछ, या फिर और एक बार समझाऊँ तो देखिए 5/3 जो है, दिस वन इज क्लियरली ग्रेटर देन 1, तो यानी कि ये पॉजिटिव साइड में होगा, ठीक है। और 5 ऊपर है तो हम लोग पहले ही 5 तक चले जाएंगे, विच इज लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस डिस्टेंस इज 5। ओके, and now we have to divide 5 into 3 parts, because 5/3 can be written as like this. Okay, so if we divide this into 3 parts, each part or the value of each part will be the value of 5/3 in real life or in the real number line. So 1.6666 ये जितना भी हो गया, इसका वैल्यू हम यहाँ तक ही पकड़ कर चलेंगे, तो यही हो गया रियल नंबर लाइन का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें शायद आप पूछ सकते हैं कि भाई मतलब ये जो 1.66 है, क्या हम लोग इसके ज़रिए ये कर सकते हैं? हाँ, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो 5/3 को मैं पहले ऐसे डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट नंबर लाइन की मदद से इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस वन इज़ क्वाइट इजी एंड लेस टाइम टेकिंग। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके ज़रिए हम लोग आगे का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, ये शायद 2-3 वीडियोस है, ठीक है। तो चलिए एक वीडियो देख लेते हैं, और इस बार मैं वीडियो को थोड़ा
फास्ट पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका 3 वीडियो मिलेगा, तो चलिए एक वीडियो देख लेते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो Before we look at addition or subtraction of real numbers, we need to understand a few basics first. Consider the nth root of a. It is written like this. N is called the index. This sign is called the radical and a is called the base. It's called the nth root of a. Until now, we have looked at numbers like these. We call this the square root of 7. So 7 is the base and this is the radical. But what is the index? It's 2. We do not generally write 2 here when we take the square root or the second root of a number. It's because we use it very commonly. So the radical without the index means it's the square root. So to write the fifth root of 12, we write the radical with the 5 here and the base 12 inside. The only place where we are allowed not to write the index is the second root or the square root. Can we add or subtract these two numbers? Square root of 7 and fifth root of 12? No, we cannot. What kind of real numbers can we add then? We can add or subtract the numbers only if they have the same base and the same index. Both these conditions have to be satisfied. Remember, same base and same index. They can be added or subtracted. So if we have two numbers like 4th root of 5 and 8 multiplied by 4th root of 5, can we add them? Yes, the base is 5 and the index is 4. Their sum will equal 9 4th root of 5. This was the first important concept we had to understand before looking at operations on real numbers. Same base and same index can be added or subtracted. We will come to the examples later, but let us understand the second important concept now. It is the concept of the simplest form. What does it mean and why are we learning this now? Look at this number, root 8. What do you think is the base and the index of this number? Well, it's simple. The base is 8 and the index is 2 as it's the square root, correct? Now let's try writing 8 in terms of its prime factors. It can be written as root of 2 times 2 times 2. Since it's a square root, we look for pairs of same numbers. We can form this pair here and take one number out from it. That gives us 2 root 2. So the number root 8 can also be written as 2 root 2. They are equivalent. This is called the simplest form of root 8. Now you can say that the base is 2 and the index is also 2. What about cube root of 32? As we see it, the base is 32 and the index is 3. Writing 32 in terms of its prime factors, we get cube root of 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Since it's a cube root, we take roots of 3 and take one number out from that group. We can make just this one root here, and what remains is 2 times 2, which equals 4. Hence, this will equal 2 multiplied by cube root of 4. This is the simplest form of cube root of 32. What does this tell us? Assume we're given two numbers, root 2 and root 8, and we are asked if they can be added. Well, you might think no, since their base is different, but as we saw, root 8 can be written as 2 root 2, and sum of root 2 and 2 root 2 will give us 3 root 2 or 3 multiplied by root 2. So before you solve any problem based on operations or rational numbers, it would be a good idea to first reduce the number to its simplest form and then proceed. So what did we have just learned? That to solve the real numbers or calculate the real numbers, we have to just keep them in their simplest form. Okay, so the next one. Okay, solve the question. You bought a shirt for rupees 45 rupees and 50 paisa or 50 paisa and paid with a 100 rupees bill. How much change will you receive? So quite simple one. What we have to do is to subtract
this from 100. Okay, this is quite easy one. We can do it just like in mental, like how much number it takes to go to 50. So that is 4.5. Okay, and from 50 to 100 it takes 50. So the answer will be 54.50. Okay, so these are all the mental calculations which you can practice in your home, but you can also like subtract it like in the basic way. 0, 5, 1 in a hand, 4, 5, yes, just like this. Okay, 54.50 rupees. The next one, this one is the same video, it's like the extension of the previous one, so we are skipping it right now. Okay. Now we have to solve the question, just like we have watched the video, we have to solve this one. So try to solve the first one, that what they have told you, that we have to just simplify these numbers. Okay, but here like for these two specific examples we don't need simplification, because these two numbers have common root. Irrational number is already multiplied, like 2 into root 5 can be also written as 2 into root 5. Okay, and 7 root 5 can also be written as 7 root 5. So what we can do is just simply add these two numbers. Okay, so the answer will be 9 root 5. And if you are wondering that how it becoming like this, so just use the distributive property or take root 5 as the common. Okay, and it will be 2 plus 7, that means 9. So the answer will be 9 root 5. Okay, which means 9 into root 5. Okay, so now tell me what the next one will be. This is quite the shortcut process to solve this kind of numbers, like just take 1, put it, as we all know that if there is no number, we always take 1 as like denominator. In the same way we will solve these rooted questions as by taking 1 as the root if there is no number. So it will be 1 root 5 plus 3 root 5. So the answer will be 4 root 5, just like the previous one. Okay. And why we are taking these numbers as it whole, and why we are adding them? So the reason is, when root number is multiplied with any numbers, and we are using distributive property to solve this. Okay. Just like this. Okay, now check, now do sum with me or do it yourself. So I will do the 2, any 2. So first I am doing the first one. Okay, so the first one will be 2 root 27 and 3 root 3. So 27 can be written as 3 into 3 into 3, and 3 root 3 can be written as like this. So we can keep a pair of 3 out of the root, so it will become like 3 into 2 root 3 plus 3 root 3. So it will be 3 2s are 6, 6 root 3 plus 3 root 3. Okay, so and the answer will be
9 root 3. See it and try it yourself. Okay, keep a pen and copy and try to do it right now whenever you are watching this video, so it will be more understandable. Okay, so now the third one. Okay, for doing the third one I am doing it like this. Okay, 5 root 18 minus 3 root 8. Okay, so 5 root 18 can be written as 3 into 2 minus root 8 can be written as 2 into 2 into 2. Okay, so 3 into 3 is a pair which we will keep out from the root, and we know that when we take any pair out of the root, okay, so where we are at, let's write the number 5 root 18 minus 3 root 8. Okay, so 5 root 18 can be also written as 3 into 2, and 3 root 8 can be written as 2 into 2 into 2. So we will take 3 out of the root because 3 into 3 is a pair. So 5 into 3 into root 2, and then we will also take 2 out of the root because 2 into 2 is also a pair. So it will be like this. Okay, so in the next, here it is 15 root 2 minus 6 root 2. So the answer will be simple as like 9 root 2. Okay, 9 root 2. So this is all, and you can try 2 and 4 at your home. Okay. So here all the answers been done. Okay. Okay, now multiplication and division of real numbers of higher than ordered 2. Okay, so let's watch this video because this video is a little beneficial. So What are real numbers with order 2? They are numbers which have the index equal to 2. Something like
write it as 3 multiplied by 2. These are the rational numbers. Multiplied by root 5 multiplied by root 5. These are the two irrational numbers. 3 multiplied by 2 equals 6, and using the formula we just saw, root 5 multiplied by root 5 can be written as root of 5 multiplied by 5. This will equal the square root of 25, which is 5. So this equals 6 multiplied by 5, which is 30. In this example, the order was 2 and the base of both numbers was also the same. In the second part of the video, we will look at multiplying and dividing real numbers with order 2 but with different bases. So in this video they have just discussed that how we can use the root operations and do the multiplication and the division just like we have done in this addition and subtraction the same way. Okay, so now let's just try to do some more problems and we are going to discuss it in the detail. Okay, we also learned addition, subtraction, multiplication, division of rational numbers. Yes, it's just like fractions. What's the difference between rational numbers and fractions? Okay, we have already learned it in the class 8 rational number chapter. Okay, so try to learn it again. Fractions and rational numbers are numbers that can be expressed in the p by q where q is not equals to 0. For fractions, p and q are natural numbers. For rational numbers, p and q are integers. Fractions are always non-negative. Rational numbers can be negative also. Fractions are parts of whole. Rational numbers can be any number satisfying the definition. Okay, so let's understand it a little better with the examples. Okay, 2 by 3. Tell me this one is fraction or rational number? Someone say it's a fraction, someone say it is a rational number. Yes, this is both rational numbers and fractions. Now tell me, is this a fraction or rational number? Okay, so this सभी लोग शायद बोलेंगे कि ये एक फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स दोनों ही हैं और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये सिर्फ रैशनल नंबर्स है. सो द राइट आंसर विल बी दिस वन इज only rational number. Okay, this is not a fraction because to do fraction we have to break or fragment something up. Okay, जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये देखिए ये जो बन रहा है ये जो गोल, इसको अगर मैं चारों हिस्से में बांटूं तो एक एक हिस्सा को हम लोग 1/4 बोलेंगे. ओके, लेकिन ये जो -2 है, आप किसी भी -2 को आप कैसे लाएंगे ऊपर? आप ला ही नहीं सकते. ठीक है, तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझे. तो मेरे पास ये रहा एक बड़ा सा ब्लॉक. ओके, जिसे मैंने 3 छोटे छोटे ब्लॉक से बनाया है. तो इन तीनों ब्लॉक्स को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक्स बनता है. ओके, इन एक एक ब्लॉक्स को मैं 1/3 बोलूँगा. ठीक है, तो ये हो गया 1/3. 2 ब्लॉक्स को बोलूँगा 2/3 और 3 ब्लॉक्स को बोलूँगा 3/3, जिसका वैल्यू होगा 1. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक 1 ब्लॉक को. लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि -1/3 कैसे होगा तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा, क्योंकि -1 को हम लोग एज एनी ऑब्जेक्ट वी कांट एक्सप्रेस इट. ओके, सो दैट्स वाई -1 विल बी नॉट. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि -2/3 जैसे कोई नंबर या फिर -1/3 जैसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता. यस, दे एग्जिस्ट and maybe they exist in real life also, but not every time when we are discussing the positive fractions or fractions. Okay, so that's why we need rational numbers. अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब फ्रैक्शंस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों ही नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/5 ऐसे. ठीक है,
लेकिन जब हम लोग रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे, सो देयर डोंट नीड टू बी द नेचुरल नंबर्स, दे कैन बी होल नंबर्स एज वेल। ओके, तो ये हो गया फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर के बीच डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट एक और ही मतलब एक और वीडियो है, मतलब पिछला वीडियो का ही एक्सटेंशन है, सो वी आर स्किपिंग इट। ओके, a square garden where you are playing has a side length of 6 meters. You want to find the length of diagonals of the garden. Okay, so we have to use Pythagoras theorem to find the garden. Okay, so we will also use the Pythagoras theorem to solve so many kind of questions in this chapter as well. So तो बताइए, एक स्क्वायर गार्डन हो गया जिसका साइड है 6 मीटर, whose sides are 6 meters। तो ये जो 6 मीटर्स हो गया, तो इसका जो हमें डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग we can use Pythagoras theorem easily, just like for this diagonal we can use 6 square plus 6 square। okay, just like base square plus height square is equals to hypotenuse square। okay, so the answer will be root over 72 and the answer will be like 3 root 8 maybe। okay, so let's see। okay, okay, so they took both bases। okay, so we have just done for the one and they have done just for the two। got it? okay, video time, decimal representation n of rational numbers। okay, and this video is going to be an important one, so let's see this one। वी विल ट्राई टू वॉच दोज वीडियो, हम लोग वो वीडियोज़ देखने की कोशिश करेंगे जो कि एक एक्सटेंशन की तरह है। जैसे कि आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको आगे चलकर जो वीडियो होगा वो आप फ्री टाइम में देख भी सकते हैं, लेकिन आप वो वीडियो का कंटेंट भी समझ जाएंगे, इसीलिए हम लोग स्किप कर करके वीडियो देख रहे हैं। We know that a rational number is a number that can be expressed as p by q, where q is not equal to 0. This is the traditional definition. An example would be 9 divided by 2. But
ओके, सो हमने सीखा इस टॉपिक को हमने पहले भी मतलब डिस्कस किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन recurring numbers can also be called as the real numbers as well as irrational numbers. Okay, so let's sum up the video topics here. Okay, decimal number, termination and repetition. Okay, termination comes under terminating and non-terminating. These both comes under the termination, like 2.75, okay, 3.5. These are called as the terminating numbers. Okay, because we just like if I divide 7 by 2, then the answer will be 3.5. Okay, because by taking the decimal points we can easily divide 7 with 2. But for like non-terminating numbers or the recurring numbers, like non-terminating numbers like 1 by 3. Okay, 1 by 3 is a non-terminating number. Okay, we can't fully divide 1 with the 3. So then comes the repeating, just like recurring numbers can also be like 1 by 3. 1 by 3, like if I try to divide 1 with the 3, so then the answer will be 0.3333 will get repeated. Okay, so this will be called as the non-recurring numbers. And for the non-terminating numbers, like which numbers which we can't even try to which are long but can have an answer. Okay, so currently I can't remember in this kind of examples. Okay, we will see in the like upcoming problems. And talking about non-recurring numbers, just like value of pi or value of root 3 or value of 2, these are all the non-recurring, non-terminating numbers. Okay, so these numbers doesn't have any kind of patterns and they don't usually get 0, so it doesn't gives us any kind of final answer. So that's why they are non-recurring numbers. Okay, so let's go further, like the non-terminating recurring decimals. Yes, these kind of numbers that I am talking about, that 0.6, just like they are repeating 6 multiple times, so 6 can be written as 0.6 like this and 0.6 like bar. Okay, just like in this two. So here is one, this is also terminating, like 7 comes so many times. Here 5 and 2 is coming, so that's why they are taking bar as like this or putting these two numbers. Okay, 6536, 653, 653. These numbers are terminating, so they are taking these two numbers. So they are taking bar of these two numbers. And 7.1523, 2323. So 15 will be fixed and 2323 is terminating. So we will put the bar in the head of 23. Okay. The next one. Okay. What are recurring decimal numbers? And how can we tell if a rational number is a terminating or non-terminating recurring? Okay. Let's see this video. Because these two videos are like similar ones, so let's watch how can we tell. Okay, if we can tell, then we can also write and we can also understand. So let's watch this. This is one of the most interesting videos based on classification of rational numbers. A bit long, but very interesting. We know that there are either terminating decimals or non-terminating recurring decimal numbers. We also know that they can be expressed as p divided by q, where q is not equal to 0. Terminating decimals are the ones that do not go on forever, and non-terminating decimals are called recurring if there is a set of digits after the decimal point
Okay, so what we have learned from the video, that numbers which are terminating will be pointed as T, and those which are non-terminating will be pointed as NTR. Okay, here denominator is 2, denominator is 5, denominator is 14, 15, and we can also use the prime factor rather than this. So this was the case or the scenario. So what we have learned, that here these two numbers are non-terminating recurring decimal numbers. So from these two numbers, what we are and why we are calling these numbers as non-terminating decimal numbers, that these numbers doesn't have any kind of pattern. Just like it has a pattern and it also has a pattern, but these don't have any kind of pattern. So that's why they will be called as the non-terminating and non-recurring decimal numbers. Okay, so let's understand the definition. A decimal in which to the right of the decimal a particular digit or sequence of digits repeats itself indefinitely is called a recurring or repeating decimals. It refers to the decimal representation of a number whose digits are periodic or repeating its values at regular intervals, and the infinitely repeated portion is not zero. Okay, so just like what we have learned, that they don't repeat themselves, and also they will, and the operation will go like for the indefinite edges. So these will be called as the non-definite recurring decimals. Okay, convert the following decimal numbers into P by Q form. Okay. So what we have to do is to take, these are like a little calculative ones. We have to keep these numbers as the x 4.3222 or x equals to 4.32 decimal. Okay, so then we have to multiply both sides with the 10, which they have done it, and 2 can be expressed as the 2 by 9 form, and we can do like this. Okay, so let's watch a video that how we are writing this terminating decimal. That's why maybe you will get a clear idea about it.
Just to check your answer, it's always recommended that you convert this into a normal fraction and verify. This would equal 2 multiplied by 40 plus 9 by 40. That would equal 18 plus 9 by 40, which equals 89 by 40. Same as the answer we got earlier. While converting it into a mixed fraction, just remember that the number to the left of the decimal will be the whole part and the number to the right of the decimal will be the numerator of the fractional part. The denominator in both the cases is the same. 10 raised to the number of digits after the decimal place. Okay, maybe the video has become a little bit long, so let's end this class in this point. Okay, so we have already learned the recurring decimal definition. So in the next class we will start from after that. Okay, we also have converting the numbers, and also we have expressing the numbers in the p by q form, and we also have representation of irrational numbers in the number line. So these all we are going to learn in the next class. Okay, so let's end this class here. So let's end this in this point. Okay, and I am going to see you in the next class. Okay, and discuss the rest of the chapter in the next class. Okay, bye.